व्हाट इज द रेंज ऑफ एन एक्स-रेज बेटा? एक्स-रेज का रेंज जो है ना, इट लाइज इन बिटवीन 1 एंगस्ट्रॉम्स टू योर 100 एंगस्ट्रॉम्स पर डेफिनेशन। क्लियर? अभी प्रोड्यूस कैसा होता है बेटा, याद है आप लोग किसी को? हाउ द एक्स-रेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड? रिवर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। रिवर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। electron which are being, I mean, not on metal surfaces exactly, I can say some metallic targets, very huge atomic mass इसका होता है ना उसके ऊपर, isn't it? And the velocity or the acceleration of the charged particles are very very huge, isn't it? So can I say that when the fast moving electrons, when a fast moving electrons strike a target of high melting point, this is very important bit, टारगेट के लिए क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एटॉमिक मास, हाई एटॉमिक मास। तो जब स्ट्राइक करेंगे एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड, एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड। सो आई होप यू हेवी गॉट मेटल्स आल्सो। हाँ, so when a fast moving electrons are striking a target of your high melting point and of your high atomic mass, x-rays have been produced. clear? इसका रफ अगर मैं ट्यूब ड्रॉ करूं, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिए। ये जो ट्यूब होता है इसका बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स होता है, ऐसा कुछ होता है, एक वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर एक फिलामेंट, यहाँ पर, और उसके ऊपर जो है ना एक टारगेट ऐसा वाला, एक मेटल टारगेट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग इट टू बाय द पैट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। एंड दिस वन इज राइट नाउ कनेक्टेड टू समवेयर हियर, राइट। यहाँ पर एक मेटल प्लेट होगा, दिस कनेक्टेड टू दिस वन, ऐसा कुछ। ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव पार्ट है, तो दिस विल बी इक्वल टू योर एनोड, जिसको हम लोग टारगेट भी बोलते हैं, isn't it? Am I clear? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स अभी निकल रहे हैं बेसिकली, दिस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बीन कमिंग आउट विद वेरी ह्यूज स्पीड, दे आर कमिंग एंड हिटिंग दिस टारगेट। जैसे इसको टारगेट को हिट करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस आर बीन प्रोड्यूस, सर्टेन अमाउंट ऑफ योर रेस आर बीन प्रोड्यूस्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स-रेज, isn't it? और दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ऑफ योर कोलिएज ट्यूब, इज कॉल्ड एज अबाउट कोलिएज ट्यूब और रॉन्टेंजेंट ट्यूब, ठीक है। So the anode का property क्या है बेटा? It should be having a high melting point and as well as of your high atomic mass. So X-rays have been produced. ये फिलामेंट का रोल क्या है यहाँ पर बताइए? ये फिलामेंट के ऊपर ये जो येलो ब्लू वाला लिखा है ना मैंने, this one is right now for your cathode. इस फिलामेंट को हम लोग छोटा सा एक पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, जहां से हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब लाइक 5 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड होती है, तो ये फिलामेंट्स इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट ये कैथोड के ऊपर जाके जमा होंगे, उसको हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं विद वेरी ह्यूज पोटेंशियल। इसको एक ह्यूज पोटेंशियल दे रहे हैं, सम अराउंड लाइक 10,000 वोल्ट वगैरह का पोटेंशियल जब दे रहे हैं, तो इसकी जो स्पीड रहेगी ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज गोइंग विद वेरी ह्यूज स्पीड एंड हिट्स दिस टारगेट। तो जैसे इस टारगेट को हिट करेगा, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो ये मेल्ट करना जाएगा। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हाटएवर द रेडिएशंस आर बीइंग कमिंग आउट, दैट रेडिएशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स-रेज बुला रहे हैं। I hope you got an idea right now for this one. So what exactly an X-rays? When a fast moving electrons strikes a target of your high melting point and atomic mass, X-rays are being produced. और ये जो फिलामेंट है ना बेसिकली, यहाँ पर भी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, intensity of X-rays is proportional to, याद है किसी को, is proportional to what? Filament current is proportional to filament current, यानी ये बोलो फिलामेंट, ये जो येलो वाला लिखा है मैंने, this one is called for your filament,
यानी 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 5 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे जैसे जैसा पोटेंशियल बड़ा होगा ना इस फिलामेंट्स में वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी सो इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज किस पे डिपेंड करेगा बेटा फिलामेंट करंट पे डिपेंड करेगा वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट पेनिट्रेटिंग पावर इसका पेनिट्रेटिंग जो पावर होता है penetrating power is proportional to potential difference यानी कैथोड को जो पोटेंशियल लगाया ना उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूर फिलामेंट एंड टारगेट क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से करेगा और उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जब जाएगा तो जो भी एक मेटल सरफेस आएगा तो उस पर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन जो भी एनर्जी निकल रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्सरेज बोल रहे हैं बेसिकली सो पेनिट्रेटिंग पावर इज प्रोपोर्शनल to your potential difference across your filament and as well as of your target am I clear उसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरेज इज प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट हमें क्लियर चलो नेक्स्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सरे स्पेक्ट्रम मतलब व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बीन स्ट्राइकिंग दिस टारगेट बेटा isn't it? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हो ना कभी कभी कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके निकाल देगा या कंटिन्यूअसली उसके अंदर पूरा पेनिट्रेट होते हुए जाएगा तो ड्यूरिंग दिस टू प्रोसेसेस जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो उस प्रोसेस के डिपेंडिंग अपॉन में अपने कुछ दो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं वन इज नोन एज ऑफ योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अनदर वन इज कॉल्ड एज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम आई होप यू रिमेंबर दिस वन द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑफ योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इन द न्यूक्लियस मूव करते जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस सर्टेन रेडिएशंस हैव बीन प्रोड्यूस्ड सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम्स are produced due to deceleration of electrons मतलब क्या देखिए मान के चलिए अपने पास न्यूक्लियस है सेंटर पे दिस वन इज योर न्यूक्लियस इसके अतराफ अपने पास ऑर्बिट है वन इज ऑफ योर के ऑर्बिट अनदर इज नथिंग बट ऑफ योर एल ऑर्बिट the next one is nothing but of your m orbit go on through like this one m l n isn't it say k sorry nucleus लिया ना मैंने k isn't it तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे हुए बेसिकली तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ना इफ दे हैव बीन जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन m से लेके k के शेल में आ गया so during this process whatever the energy is been liberated that will be called as of your k beta if an electron is jumping from your L shell to your K shell, then the energy which is been liberated in this one is called as of your K alpha. यानी L से अगर K आ रहा है तो अल्फा, M से अगर K जा रहा है तो K बीटा. हमें क्लियर? So continuous express spectrum मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा था वेरी ह्यूज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसा जाएगा इसके अंदर धंस जाएगा लेकिन कहीं पर भी कोई भी चीज को नहीं करेगा एज इट इज पूरा का पूरा एलिमेंट में ट्रांसफर करके बाहर निकल जाएगा तो ये जैसे जैसे नजदीक जाएगा न्यूक्लियस में इस इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन होगा ना कम हो जाएगा so during that decrease in the acceleration of an electron certain amount of radiations have been produced that radiations are only called as of your continuous spectrum just theoretically याद रख लीजिए continuous spectrum मतलब this have been produced due to the डिसेलरेशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों डिसेलरेशन हो रहा है बेटा न्यूक्लियस के पास नेचर पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस अपने आप के पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना कम हो जाएगी ड्यूरिंग दैट reducing of your acceleration whatever the radiations have been coming out that side of radiations are called as of your continuous spectrum I hope you got it right now आ गया चलो the next one and very important that is about your characteristic spectrum
मान के चलो जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, दे विल बी यूजिंग द लेजर ट्रीटमेंट्स। मान के चलो कोई पार्ट ऑफ एन ऑर्गन को निकालना है, वो पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग टारगेट करके उसके ऊपर रेडिएशंस भेजेंगे, तो उस रेडिएशंस की वजह से वहां पर जो भी एलिमेंट रहेगा ना वो मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल बी कमिंग आउट। यानी एक पर्टिकुलर टारगेट को टारगेट करके उसके ऊपर हीट रेडिएशंस डालना सो दैट इट विल बी मेल्टिंग, दैट आर कॉल्ड एज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट करके उसके ऊपर रेडिएशंस डालना, isn't it? So characteristic spectrums, I can say that they are produced due to knock off bound electrons from inner orbit, from your inner orbit, and the vacancy so caused is filled by either free electron or electron from higher orbits, electron from your higher orbits। जैसे मान के चलो मैंने एल शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ना, दैट वैकेंसी इज बीइंग फिल्ड बाय द either by the m shell or either by your l shell, that depend करता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फ्रॉम k shell, then immediately that will be filled by the electron which has been present immediately in the upper orbit, यानी l shell का जो इलेक्ट्रॉन है ना, it will try to jump to the lower orbit, ठीक है ना। so during that jumping, whatever the characters, the rays have been coming out, they are called as of your characteristic type of your x-rays। I hope you are clear everyone। एक बार देख लीजिए फिर से, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हाट बेटा, नॉकिंग डाउन ऑफ योर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इससे बाउंड होते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इनर ऑर्बिट से निकाल रहे हैं परफेक्टली, एंड द वैकेंसी सो कॉज्ड इज बीइंग फिल्ड बाय either a free electron or the electron from your higher orbit, that is called as of your characteristic spectrum। थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए याद रखना है बेटा। अगर मैं मैथमेटिकली मैं बताऊं, एनर्जी इन द एल शेल माइनस एनर्जी इन द के शेल विल बी इक्वल टू योर h into frequency of your k alpha। और else मान के चलो m shell से जा रहा है, em minus of your ek will be equal to your Planck's constant h into f, this will be k into your beta, isn't it? So overall you can say that energy जो एक ही फॉर्मूला होता है पूरा एक्सरेस में, that is energy of your x-ray, energy of your x-ray is given by the formula h into frequency, that is equals to hc by your lambda। So this is only the formula which you need to remember in the x-rays। Energy is equals to your hc, or it is your h nu, or it is hc by your lambda, ठीक है। And one more important point, dynamic mass of your x-rays, so that will be equal to m is equals to h into your f divided by your c square, e is equals to mc square form में से बेटा, or else that will be written as of your h divided by c into your wavelength, ठीक है। सो ये आप रफली याद रख सकते हैं, एक बार पढ़ के रख लीजिए, m is equals to mc by lambda, यानी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, that is equals to m into c square, तो मास is equals to h into f divided by c square, or it is h by c into your lambda, ठीक है। चल, this you keep a very important star mark beta। minimum wavelength of continuous x-rays, minimum wavelength of your continuous x-rays, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए। so minimum wavelength will be equal to your hc divided by e into v, or that is equals to 12400 divided by your v, wavelength की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम्स। so this will be the formula, lambda minima is equals to your hc by your electron volt, or that is equals to 12400 divided by your v, v is nothing but your what beta volt, and unit of the wavelength is right now for your angstroms. This is also one of the important formula you need to remember। Lambda minima is equals to hc by e into v,
V is your potential, E is the charge of electron. Value of that one, if I'm simplifying, we're getting 12400 divided by V. And dynamic mass का formula M is equals to hc divided by your c square. Done. And energy of an X-rays का formula क्या है बेटा? Energy of your X-rays का formula is hc divided by your RHC RHC. Done. ये वाला भी याद रखिए. If an electron is jumping from your L shell to K shell, this will be your H into F K alpha. If it is jumping from your M shell to K shell, it is your H into F K beta. ठीक है? X-rays में बस इतना याद रख लीजिए. That's more than enough for doing the numericals part. ठीक है बेटा? एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए. You'll get an idea how the problems have been framed on this one. Find the shortest wavelength. Find the shortest wavelength of the X-rays which are emitted by X-ray tube operating at 30 kilovolt. चलिए बताइए. Find the shortest wavelength. Shortest wavelength का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको. Lambda minima is equals to 12400 divided by potential. Unit will be equal to how much for me? Angstroms. And lambda minima will be equal to 12400 divided by potential is given how much for me? 30 kilovolts. यानी 30 into 10 to the power of 3. Done. So that will become for me how much better? 124. इसमें से दो जीरो चले जाएंगे, इसमें से भी दो जीरो चले जाएंगे. So it is 124 divided by your 30 into your 10. ये वैल्यू कितनी आ रही देख लीजिए. 124 divided by 300. 124 divided by 300. Then R it is 124 divided by 3 into 10 to the power of minus 2. 4 में आ जाएगा. 3 4s are 12. Isn't it? 3 1s are 3. फिर यहाँ पर बच गया point. Isn't it? 0. 3 3s are 41. Isn't it? So approximately मैं लिख सकता हूँ 10 to the power of minus 2 है. तो 0.4125 angstroms approximately. Okay, 414 approximately. जैसा भी कर सकते डिपेंड करता है. हमें क्लियर? On note. देख लीजिए बेटा. फर्स्ट वन. K alpha X-rays. कब एमिट करेंगे? If electron jumps from L shell to K shell. Isn't it? उसी तरह से K beta X-ray. ये कब करेंगे? If electron jumps from M shell to K shell. ठीक है? Same way. K gamma X-rays. ये कब यूज करेंगे? If electron jumps from higher orbit यानी n से लेके k. तो इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? K series. उसी तरह से L series, M series गॉन हो जाएगा इसके. ठीक है बेटा? हमें क्लियर?
वन मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन दिस वन, मोजलेस लॉ। ये तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते ही है, फिर भी मैं आप लोग को एक बार लिख दे रहा हूँ। मोजलेस लॉ याद है किसी को? स्माइल। मोजलेस लॉ किसके लिए यूज होता है बेटा? एनीवन? एटॉमिक नंबर, बुशरा, वेरी गुड। फॉर्मूला याद है? रूट ऑफ योर न्यू इज इक्वल्स टू योर ए इंटू जेड माइनस ऑफ योर सिग्मा, या बी बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, isn't it? लैम्डा इज नथिंग बट व्हाट बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एक्सरेस, यानी 1 बाई लैम्डा अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू योर आर इंटू योर जेड माइनस ऑफ योर सिग्मा होल स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर वेवलेंथ। यहाँ पर देखो z माइनस सिग्मा इज नोन एज ऑफ योर effective atomic number, effective atomic number, isn't it? like say for k सीरीज अगर मैं बात कर रहा हूँ, पर k सीरीज के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 to the power of 7 मीटर इनवर्स, which is known as a रेडबर्ग्स कांस्टेंट। यानी अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, न्यू इज इक्वल्स टू c by your lambda, यानी न्यू विल बी इक्वल टू योर r into your c into this is z minus of your sigma whole square into 1 by n1 square minus of your 1 by n2 square। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं तो दिस वन इज ऑफ योर न्यू, ये पूरा जो टर्म आता है स्क्वायर कर लीजिए, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ योर न्यू इज इक्वल्स टू योर a into z माइनस ऑफ योर सिग्मा। और ये जो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? अंडर रूट ऑफ योर rc into 1 by n1 square minus of your 1 by n2 square। डन? बस इतना फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा। ये जो कांस्टेंट है ना सिग्मा की, दैट वैल्यू विल बी गिवन, and square root of the frequency is linearly proportional to the atomic number। So can I say your one point? Square root of frequency, square root of your frequency is linearly proportional to atomic number। Very important but periodical questions के लिए very important है। root of your nu is proportional to what? It is proportional to your atomic number, and sigma की value will be equal to 1 for the k series and for L series M series वो न्यूमेरिकल में देगा प्रॉब्लम में, और ये की वैल्यू जो होगी that will be under root of your RC 1 by n1 square minus of your 1 by n2 square। Am I clear for everyone? बस इतनी चीजें आप लोग को याद रखनी है in the X-rays for doing the numericals। Moseley's law is one of the important formula to be remembered better। फॉर्मूला याद रहेगा ना? रूट ऑफ योर म्यू, ये वाला फॉर्मूला, रूट ऑफ योर म्यू इज इक्वल टू a into z minus of your sigma। सिग्मा की वैल्यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फॉर सिग्मा की वैल्यू हो गई 1 फॉर द k सीरीज, एंड z minus 1 इज नोन एज ऑफ योर इफेक्टिव मास। और 1 बाई लैम्डा की वैल्यू पूरा डिराइव करेंगे तो ये आ रहा है, तो अपने को पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा of X-ray is shown in figure। सोच समझ के बोलना, which is K alpha and K beta। ठीक है, डायग्राम आपको दे रखा है ऐसा कुछ। और यहाँ पर हो गया इंटेंसिटी, और यहाँ पर हो गया वेवलेंथ लैम्डा। और ये जो ग्राफ जा रहा है ना, मिनिमम से जा रहा है, ये हो गया लैम्डा मिनिमम, ग्राफ ऐसा जा रहा है,
फिर एक ऐसे शॉ ऑफ जा रहा है सब, फिर ऐसा जा रहा है कांस्टेंट, फिर एक शॉ ऑफ जिस तरह से आ रहा है, देन फाइनली इट इज फॉलिंग डाउन सिर्फ। और ये हो गया 1, और ये हो गया, और ये हो गया लैम्डा मिनिमम, मिनिमम वेवलेंथ जो लिखा था ना अपन को। चलिए बताइए, characteristic spectra for the X-ray, characteristic spectra of your X-ray shown in figure, which is K alpha and which is K beta. तो बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला अपन को मालूम है, लैम्डा इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय डेल्टा E, यानी जिसका ज्यादा वेवलेंथ उसकी एनर्जी का, isn't it? So I can say here, since energy difference यानी डेल्टा E of your K alpha is less than K beta, क्योंकि K alpha कहां से आता है बेटा, K शेल से, बीटा इस पर एल शेल, एनर्जी ज्यादा रहेगी, यानी अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है देन वेवलेंथ क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन से दैट एनर्जी डिफरेंस ऑफ योर K alpha is lesser than energy difference of your K beta। इसका मतलब वेवलेंथ जो हो जाएगा ना इसका रेसिप्रोकल होगा, wavelength of your K beta will be lesser than wavelength of your K alpha. So therefore I can say that 1 represents me the K beta and 2 represents me the K alpha. So lesser the wavelength, more will be the energy difference part. So 1 will represents me the K beta and 2 will represents me the K alpha. तो ये हो गया K beta और ये हो गया K alpha. Am I clear? Am I clear? Any doubt to anyone in this one? Sir, energy gap for alpha is less. That's why हाँ, wavelength is more. एनर्जी गैप जो है ना 1 से 2 तक जा रहे हैं ना, एनर्जी डिफरेंस ऑफ द के अल्फा इज लेसर देन के बीटा। वो क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस और उसके बाद फॉलोड बाय योर के शेल, एल शेल एंड एम शेल, isn't it? This one is K, this is your L and this is your M. K shell मतलब an electron is jumping from K to your nucleus or from L to your K, isn't it? So energy difference of your K alpha is much lesser than K beta. अगर एनर्जी डिफरेंस इसकी कम है तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी, isn't it? So I'm writing here, see, delta K alpha is lesser than of your delta E of your K beta. So obviously wavelength of your K beta will be lesser than of your wavelength of your K alpha. So first one will represent me the beta and second one will represent me the alpha. Sir, हाँ बेटा, सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मतलब नीचे के एनर्जी लेवल्स में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस रहता है। नहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंस क्या चल रहा है, ओनली एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स व्हिच हैव बीन एमिटेड, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी जो बन रही है ना डेल्टा ई, दैट इज E2 माइनस E1, वही देख रहे हैं, इंडिविजुअल एनर्जीज नहीं देख रहे हैं। डिफरेंस कभी भी कम होते जाएगा हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी तक। यस सर। इसमें इसमें इतने फॉर्मुलेस आपको मिनिमम याद रखना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। और बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अपन अपने के न्यूमेरिकल्स निकलते हैं ये वाला ही निकलता है बेटा। एक्स का मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा मिनिमा इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय v। ये जो v क्या है, दिस v रिप्रेजेंट्स फॉर मी द पोटेंशियल। क्लियर? चल एक पेपर लेके क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा सभी लोग, गुड क्वेश्चन।
X-ray has a wavelength 0.010 angstroms. Its momentum is चलो ट्राई करिए, ऑप्शन है लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा। मेरे पास एक्सरे है बेटा, विच हैज ए वेवलेंथ दे रखा है, इसका मोमेंटम निकालना। अपने को एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, E is equals to your hc by your lambda, isn't it? Or else E is equals to your m into c square, ये पूरा लिखा था मैंने, यानी mc square will be equal to your hc divided by lambda लिखेंगे अपन, isn't it? तो ये c और ये c चले गया, m into c is nothing but what बेटा, momentum is equals to h by your lambda। तो मोमेंटम में निकालना ना, तो h की वैल्यू कितनी है, 6.626 into 10 to the power of -34 यूनिट होती है जॉल पर सेकेंड, याद होगा। वेवलेंथ इज गिवन फॉर मी 0.010 एंगस्ट्रॉम्स, यानी 10 to the power of -10 meters, isn't it? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सी हाउ मच आई एम गेटिंग द आंसर। ये देखो ऑलमोस्ट लाइक वन टर्म ही हो जाएगा, तो मैं इसको ऑलमोस्ट वन मान के चलूं तो अप्रोक्सीमेटली 6.626 ही होगा इंटू 10 to the power of -34 प्लस 10 -24 -20 20 अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ इसको, पूरा मैं वन मान के चल रहा हूँ। और नियर बाय और एग्जैक्टली वैल्यूज दे, अगर आपको ऑप्शंस नियर बाय में दे रहा है देन यू कैन चेंज दी वैल्यूज, यानी 6.6 ना हो कि अगर ऑप्शंस में मान के चलो 6.626 into 10 to the power of -24, सेकंड ऑप्शन में है 2.126 into 10 to the power of -22, थर्ड ऑप्शन है मान के चलो 3.456, ऐसा कुछ दे रहा है तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक द आंसर एंड, हमें क्लियर? आ गया बेटा, 10 power -22 नॉट 24, 22 आ रहा, ठीक है फिर 10 power -20, ये कितना डिजिट में 1 2 3 0.0102, हाँ 10 power -20 अप्रोक्सीमेटली कर ली को, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। एन एक्सरे इज ऑपरेटेड at 20 kilovolt. Calculate the minimum wavelength. Calculate the minimum wavelength of X-ray emitting from it. Emitting from it. चलो कोई बताएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है।62 into 10 power -3 आया, what is the formula you'll be using? Lambda minima is equals to 12400 divided by potential. Unit will be your angstroms, यानी this will be equal to 12400 divided by potential कितना है बेटा, 20 kilowatts, यानी 20 into 10 to the power of 3 है कि नहीं। तो यहाँ से 0 चले गया, यहाँ से 2 चले जाएगा, तो इट इज 124 डिवाइडेड बाई 20, यानी ये कितना बन जाएगा मेरे पास 20 into 10 200 आया। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखिए, 124 डिवाइडेड बाई 2,
2 6 2 2 यानी 0.62 something like this angstroms. सर -2 नैनोमीटर है ना बेटा? में भी कर सकते सर, नैनोमीटर से भी कर सकते हैं। हाँ, नैनोमीटर्स में भी कर सकते। नैनोमीटर्स में कर रहे थे, ये कितना फॉर्मूला हो गया? 1240 1240 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यूनिट यस विल सर, बी योर नैनोमीटर्स। डिपेंड कर रहा है कि आपको ऑप्शंस किस में दे रखा है। यस सर। See this question, madam. The K alpha X-ray emission of tungsten occurs at wavelength lambda is equals to 0.021 nanometers. The question is, what is the energy difference? What is the energy difference between K and your L levels in this atom? First option is 69 kilo electron volt, 5.9 kilo electron volt, 59 kilo electron volt, and 49 kilo electron. चलिए बताइए. K alpha X-ray emission line of tungsten is occurring at what wavelength, beta? 0.021 nanometers. And what is energy difference between L and K? That means electron is jumping from L orbit to your K orbit, isn't it? Energy difference का formula भी बताया मैंने. Delta E is equals to hc divided by lambda. यानी that is equals to 1240 divided by wavelength nanometer में दे रखा है. So I can take this one as of your in terms of nanometers. This will be equal to wavelength 0.021, isn't it? So this is nanometer electron volt, and this one is your nanometer. So this will be equal to 124 divided by 21 into your जाएगा 10 to the power of 4, isn't it? तो approximately कितना आ रहा देख लीजिए. 124 divided by 21. फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है. 20 ले सकते सर, अप्रॉक्स 124 divided by 21.
सर अप्रॉक्स 20 लेना सर। अप्रोक्सीमेट 20 लोग भी तो कितना आएगा? 62 आ रहा है 60। 2। देखो एग्जैक्टली अगर लेके देखो 124 डिवाइडेड बाई 21, ये बराबर लिखा मैंने 124 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 10 पावर 4। ये नैनोमीटर नैनोमीटर चले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एनर्जी। कितना आ रहा है बेटा? 5.9 आ रहा सर एग्जैक्टली। 5.9 9। into 10 to the power of 4 electron volt. And can I write this one as 59 into 10 to the power of 3 electron volt? यस सर। 59 मतलब exactly 59 आ रहा है? 5.9 आ रहा सर। हाँ तो 5.9 into 10 power 4 हो गया ना? यस सर। तो यहाँ पर तो 10 पावर 3 है, नहीं होगा ना? यस सर। 5.9 into 10 to the power of 4. So it will be 59 kilowatts. So this will be 59 kilo electron volt. Third option. आ गया? यस सर। चलो 59 वेरी गुड। थोड़ा सा पॉइंट याद रख लीजिए बेटा, ये जो के अल्फा और के बीटा है ना, दे डिपेंड्स ऑन मटेरियल, दे डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जैसा मान के चलो, इसका आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बोलिए। ये एनर्जी लेवल से, दिस इज योर एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 2, एन इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 4, यानी के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है ना? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम एल टू के, तो मैंने क्या बोला था, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? के अल्फा। If it is jumping from your L to K, this is represented by your K beta. If it is jumping from your N to your K, this will be called as of your K gamma. ठीक है ना? The same way, if I'm jumping from your M to your L, this will be called as of your L alpha. If it is jumping from here to here, this will be called as of your L beta, like that. और अगर N से यहाँ पर कूद रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे M alpha। ठीक है ना? तो अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर के अल्फा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू योर HC डिवाइडेड बाय एनर्जी डिफरेंस, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर एनर्जी ऑफ द के शेल माइनस एनर्जी ऑफ योर एल शेल, isn't it? For k beta wavelength will be equal to your HC divided by energy of the k minus energy of your m. The same way for your L alpha कितना हो जाएगा बेटा? Wavelength will be equal to HC divided by energy difference. So energy of your L orbit minus energy of your mth orbit. So K alpha and K beta depends on material. Is it correct or true बेटा? It depends on material. Target material पे depend करेगा. It depends upon your target material. Then ठीक है बेटा? इससे छोटा सा टॉपिक ही है बेटा, लेकिन आप लोग को एक बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना मैंने लिखा उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है,
तो थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस कर लेके थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। थोड़ा बहुत थियरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, जो जितनी भी हो मैंने लिख दी है बेसिकली, एक बार आप क्रॉस चेक करके एक बार पढ़ लीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर यू। आज जगने की रात रहने की वजह से जरा क्लास प्रीपोन करना पड़ा बेटा। टुमारो एज यूजुअली क्लास विल बी फ्रॉम 10 o'clock to 12 o'clock, वी स्टार्ट विद द न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, टेक केयर बेटा, बाय। थैंक यू सर।